Hello, everybody. Very good morning to you all. And first of all, welcome you all on the in the today's motivational series video. And this is the day 18th, and you have shown really so much love to the series. I really am thankful for you all. Today, I have come up with an amazing story for you. Your one of the favorite players' story. Can you guess the name? I mean, you might have got guessed the name by now because it's already mentioned in the heading. So yes, I have come up today with the story of the Lionel Messi, the most favorite and the most lovable player of all over the world. He was born in the Rosario in Argentina. Everyone knows this, and his birthday comes on 24th of June 1987. But only few of you knows that he started playing for the clubs of NOB club. It's Newell Sport Old Boys Club in the year of 1995. जो local club था इनके वहाँ पे इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया था when he was only 8 year old. इतनी छोटी उम्र में इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। आप तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। मतलब इन्होंने खेलना इसलिए शुरू किया था बिकॉज़ इनकी फैमिली को भी दिख रहा था दैट ही रियली लाइक द गेम एंड ही वाज़ इनटू इट व्हेन द मोमेंट व्हेन ही स्टार्टेड लर्निंग टू हाउ टू रन एंड वॉक। तो बच्चा जहाँ पे अब खिलौने से खेलते थे, ही लव्स टू प्ले विद फुटबॉल और वो धीरे-धीरे इनका पैशन बढ़ा, धीरे-धीरे अपनी स्किल्स उन्होंने इम्प्रूव करते गए। बट सडनली यू नो व्हाट हैपेंस, काफ़ी मतलब मैंने ये नोटिस करा है और आप भी नोटिस करेंगे दैट जो बहुत ही महान खिलाड़ी होते हैं, जो मतलब बाद में जाके महान बनते हैं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई तो ट्रबल, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती ही आती है। इनकी लाइफ में भी आई। मतलब ऐसा नहीं है जिनकी लाइफ में ट्रबल नहीं आते उनका वो महान नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जनरली ये देखा गया है। बट ही डिड सफर फ्रॉम हार्मोन डेफिशिएंसी डिजीज एट द एज ऑफ 11। इन दिस डिजीज एक्चुअली बॉडी जो है वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद करती थी, तो इनकी जो ग्रोथ थी वो सारी की सारी कम हो जाएगी। तो मतलब इनकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, इनकी एज के साथ साथ मैच्योरिटी लेवल इतना बढ़ नहीं पाएगा। और बोन्स वगैरह में भी ग्रोथ हार्मोन इज आर वेरी नेसेसरी, नॉट जस्ट फॉर हाइट बट फॉर द बोन्स एंड फॉर ऑल द फिजिक एंड ऑल। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ग्रोथ हार्मोन की नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक फिक्स तरीके से होता है, तो काफ़ी लोगों के कभी कभी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, और कई बच्चों के उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इट्स रियली वेरी डेंजरस डिजीज बेसिकली। तो उस उम्र में व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 11 ओनली, तो उस उम्र में इनको इस डिजीज से मतलब क्योर होने के लिए जो इंजेक्शन लगते थे उनकी टांगों पे, इनकी टांगों पे इंजेक्शन लगते थे। और 7 दिन एक टांग पे तो 7 दिन दूसरी टांग पे इनके इंजेक्शन लगाए जाते थे। बट ही स्टिल नेवर एवर लेफ्ट फुटबॉल। कभी वो फुटबॉल खेलना छोड़े ही नहीं इन्होंने। ही स्टिल प्लेड इट every single day. He improved himself every single time he did that. And somehow the Barcelona player did like his game. काफ़ी सारे लोग थे जो इन जिनका मतलब इनके गेम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, बिकॉज जब भी इनके पास बॉल आती थी ना, तो ये 15 मिनट या 20 मिनट से पहले किसी और प्लेयर को बॉल छीनने ही नहीं देते थे। पूरा टाइम अपने पास ही बॉल रखते थे, सिंगल हैंडेडली गेम को ये आगे लेके जाते थे। एंड ही वॉज रियली स्किल्ड, ही वॉज रियली स्किल्ड एट दैट टाइम। तो इनके गेम से प्रभावित होके सम वन ऑफ हिज फैन गॉट इम्प्रेस्ड एंड ही बॉट दिस एफसीबी बार्सिलोना क्लब। दिस इज द क्लब फॉर बार्सिलोना क्लब ऑफ स्पेन ओनली। तो स्पेन का ये क्लब है। तो इनके क्लब के कुछ लोगों को इन्होंने बताया, ठीक है। और वहीं पे ही ये लोग भी कुछ है ना मतलब आए, फिर इसका गेम दिखा, मेसी का गेम दिखा। देन दे आल्सो रियली गॉट इम्प्रेस्ड विद दिस गेम एंड व्हेन दे गॉट टू नो कि इनकी जो हार्मोन डेफिशिएंसी की जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से काफ़ी इश्यू हो रहा है। क्योंकि इट वाज रियली कॉस्टली, इतना इजी नहीं था, बहुत कॉस्टली थी। ऑलमोस्ट $1500 का हर मंथ का इनका खर्चा था, इनकी इंजेक्शंस वगैरह का, और काफ़ी ज़्यादा खर्चा था। तो कुछ सालों तक तो इन्होंने, इनके फादर ने काफ़ी हेल्प की, बट अगेन उसके बाद तंगी आनी शुरू हुई। बट मेसी ने कभी खेलना छोड़ा ही नहीं। मेसी स्टिल प्लेड
और वो दिन आया जब ये लोग देखने आए, और इन्होंने इनके पेरेंट्स को ऑफर किया कि दैट वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल हिज एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे होंगे सारे के सारे हम लोग देखेंगे, विल बियर इट, बस आप इनको हमारे साथ स्पेन ले चलिए और हमारे क्लब से खिलवाइए। तो पेरेंट्स डज एग्री। और होता भी यही है बेटा कि मतलब आपने सुना ही होगा, ये काफी फेमस डायलॉग है दैट अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से करना चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो यही यही चीज थी यही चीज थी कि कहीं ना कहीं मेसी बहुत ज्यादा इस गेम से जुड़े हुए थे, एंड ही नेवर वांटेड टू क्विट द गेम, एंड इवन हिज पेरेंट्स वर होपिंग कि कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा कि ही विल सर्वाइव एंड ही विल बी प्लेइंग फॉर एवर। तो वही हुआ। एफसीबी के लोग, जो मैनेजमेंट टीम है, वो आई, देखा उनके खेल से प्रभावित हुए, एंड द होल फैमिली गॉट शिफ्टेड टू स्पेन। तो उस वक्त वो लोग सारे के सारे स्पेन में हुए, एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर द बार्सिलोना यूथ एकेडमी, एंड द क्लब्स नेम वाज ला मासिया एट दैट टाइम व्हेन ही वाज ओनली 14 इयर्स ऑफ एज। वहां से इनके करियर की स्टार्ट हुई, मतलब वहां से इन्होंने खेलना शुरू करा व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 14। और उनका जो फर्स्ट इंटरनेशनल गेम था, जो अर्जेंटीना के तरफ से जो उन्होंने खेला था फ्रॉम द टीम ऑफ अर्जेंटीना, it was in the year of 17 August 2005. On 17 August 2005, he played against Hungary for Argentina. He played that game, and it was his debut match. तो कितनी उम्र में, 18 साल की उम्र में, he played for his country, which is a huge thing for any single person. तो 14 8 की उम्र से इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे ये लोग 14 की एज में इनका स्पेन में जो बार्सिलोना क्लब है वहां पे इनकी एंट्री हुई। और फिर 2005 में ही गॉट इनटू, व्हेन ही वाज 18 इयर्स ओल्ड ओनली, ही स्टार्टेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू। और वहां से इनका चलता रहा पूरा करियर स्टार्ट हुआ। At the age of 2012, yes, at the age of 2012, he scored the maximum number of goals uh, on a single calendar year, और इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। He broke the record of the Muller, who scored around 85 goals. Yes, 85 goals in a single year in year 1972. Yes, बहुत पुराना रिकॉर्ड था, 1972 प्रोबेबली। तो ऑलमोस्ट 30 इयर्स 40 इयर्स पुराना रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक करा, 1972 और 75। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, बट या समहाउ इस ईयर के अराउंड इन्होंने स्टार्ट की अपनी जर्नी। मतलब वो जो था रिकॉर्ड था, इतने सालों का ये जो रिकॉर्ड बना हुआ था, उसको इन्होंने तोड़ा by scoring 91 goals, and his name is being added to the Guinness Book of World Record. In the year of 2016, yes, in the year of 2016, yeah, इन्होंने अपनी टीम को, अर्जेंटीना टीम को फाइनल तक का सफर तय करवाया। ही हेल्प द टीम टू रीच टू द फाइनल्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट द फाइनल्स, बट अगेन ही वन द गोल्डन गोल्डन बॉल फॉर बीइंग द बेस्ट प्लेयर। और गोल्डन बॉल उनको दी जाती है जो कि वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट प्लेयर होते हैं, इंटरनेशनल में और वर्ल्ड कप टाइम पीरियड में सबसे बेस्ट जिन्होंने खेला हुआ होता है, उनको मतलब ये जो गोल्डन बॉल है उससे वो मतलब दी जाती है, बेसिकली गोल्डन बॉल दी जाती है। सो दैट वाज हैपेंड। तो वहां पे उनको मिली, एंड ही वाज बीन अवार्डेड बीइंग बेस्ट प्लेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इट वाज अ ह्यूज डील, इट वाज रियली रियली ह्यूज डील। और फिर तो मतलब इनका सक्सेस जो था, वो स्टोरी जो थी वो इनकी बचपन से शुरू हो गई थी। इन्होंने कभी भी अपने ड्रीम्स को कभी भी गिव अप नहीं करा, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं करा, और जो भी प्रॉब्लम्स आई हर प्रॉब्लम इन्होंने फेस की, हर चीज को इन्होंने ओवरकम करा। इन्होंने, इनके पेरेंट्स ने, सबने मिलकर इनकी हेल्प की हर तरह से, and even the Barca club, people helped him. तो he had decided कि ये कभी भी बार्सिलोना क्लब तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे till the time he will get his retirement. He is into his club because of the club only. तो और बिकॉज ऑफ हिज गेम, ऑब्वियसली फॉर हिज गेम, बिकॉज ऑफ हिज गेम। तो ये सारी चीजें मिला के आज इन्हें इस महान मुकाम पे लेके आए हैं कि आज इनको हम लोग वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स में काउंट करते हैं। he is actually, if you will see his games, you will find he is amazing. The way he play, the way he shoots the ball, the way he dribbles it, the way he gets the ball from
five, six, seven, eight people in a single flow, and he scored the goal. Amazing, it's really really amazing. तो जब भी मैसी अपने सिंगल हैंडेडली गेम पे आते हैं, तब भाई साहब इनके सामने कोई भी प्लेयर टिक ही नहीं सकता. So that's his journey. So you should learn from his journey that problem comes in every in the way to success. प्रॉब्लम आएंगी सक्सेस के वे में, प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन किसके वे में आती हैं? on only on of only those who has the will and power to overcome them. Problem comes in the way to success of only those who has the will and power to overcome them. तो अगर आप में वो चीज़ है कि आप कर सकते हो, तो आपके मतलब रास्ते में कठिनाइयाँ आएँगी ही आएँगी, आएँगी ही आएँगी, और उन्हीं के हिस्से में ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि सक्सेसफुल बन सकते हैं। हर किसी के रास्ते में ये कठिनाइयाँ नहीं लिखी होती हैं, एंड दीज़ आर वेरी गुड थिंग्स। दीज़ आर गुड प्रॉब्लम्स, येस यू शुड लर्न फ्रॉम देम, क्योंकि उन्हीं प्रॉब्लम्स को आप फेस करके एक सक्सेसफुल इंसान, एक बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड और बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा लर्निंग आपको वहाँ से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा प्रॉब्लम से ही मिलेंगी। अगर आपने प्रॉब्लम्स फेस नहीं किए जीवन में, तो आप कहीं न कहीं आगे जाके जब बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करोगे, तो वो आप सीधे नीचे गिरोगे। तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को आप फेस करते हुए चलिए, छोटी-छोटी सीढ़ियाँ आप चढ़िए, और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए आप एक नई लर्निंग के साथ आगे बढ़ते रहिए। And never ever give up, never ever give up on your dreams, on your things, whatever you are doing, whatever it is. Okay, so guys, thank you so much. This is about me. I hope you really loved the session as well. And yeah, so this is it, and this is India's largest e-learning platform, Unacademy. Let's crack it. And यहाँ पे आपकी live classes चलती हैं. You get to learn from the top educators. These are the list of the educators, obviously Jayant sir as well. Okay, so this is about the plus subscription. यहाँ पे आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप पढ़ते हैं, एंड यू गेट द इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जहाँ पे आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, एंड यू गेट लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, क्रिएटिव कॉर्नर एज वेल. व्हाट इज क्रिएटिव कॉर्नर? क्रिएटिव कॉर्नर में आपके काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो कि आपकी एक तरह से पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं. दे रियली रियली हेल्प यू in your personal development. For example, debating, public speaking, effective com skills, blogging, storytelling, mastering the storytelling part, magic tricks, filmmaking, and music. These are actually helps you to grow as a, funny person, and love the in life. पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी और ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ये भी आपको आनी चाहिए. तो ये भी आपको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं. रोबोटिक्स, कोडिंग भी आपको यहाँ पे सिखाई जाती है. बहुत सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड लर्निंग, बहुत सारी दूसरी लर्निंग्स भी आपको कराई जाती है यहाँ पे. So guys, it's really really lovely to it's really really important to have to learn all such things in this competitive world, if you want to excel and if you want to have a one step ahead from all others. तो ये सारी चीज़ें आने भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. These are overall 20 I guess 25 courses. Yeah, 25 courses overall, and many more are going to be there on the platform soon. But yeah, so apart from this, this is the iconic subscription plan, and you can get the all the you will be getting all the benefits in the plus iconic plan. Basically plus के सारे benefits आपको मिलते ही हैं. Apart from this, you get personal mentor, live doubt solving, personal live doubt solving classes you get, parent connect you get, study planner you get. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं. ओके, तो आइकॉनिक इज 10 टाइम्स मोर बेनिफिशियल देन द प्लस सब्सक्रिप्शन. यस, डोंट फॉरगेट दैट. ओके, दीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस जो अभी आपको अनअकैडमी में मिल जाएंगे, एंड मैनी मोर आर गोइंग टू बी देयर लाइव सून. एंड दिस इज द material. This is the basically the features of the iconic subscriptions that are already there. You get mentorship and guidance, answer writing skills, you get study material, live test series, you get regular doubt clearing sessions, you get exhaustive course coverage, you get to learn from the top educators, unlimited access to all the courses you get, and you get all these things, and you can access all these things by sitting in at your home only, from the comfort of your home only. So these are all the benefit that Unacademy is currently providing to you all.
and don't miss it out. Don't really miss it out. You just need to download the Unacademy learning app and have to select your goal. जैसे ही आप अपना गोल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाती है. इस लिस्ट में से आप कोई भी प्लान चूज करते हैं, और इससे भी ज्यादा प्लान है. वॉट एवर द प्लान दैट यू वांट टू गो विद, यू कैन सेलेक्ट योर प्लान. Just use the code JYC10 that written in at the bottom. Use this code JYC10 and you are gonna get additional 10% discount over the any subscription plan. Even for the 6 month and 1 month plan, you are gonna get 10% for sure. It's not mentioned here, but you will definitely gonna get that as well. Okay, so don't forget to use the code JYC10 and get the additional 10% discount. और इसके साथ साथ जैन सर आपको अपनी तरफ से भी एक ऑफर दे रहे हैं, दैट यू जैन सर विल प्रोवाइड यू additional 10% from my end. If you will use my code JYC10, I'm gonna provide you 10% additional from all these discount that you will be getting here using the code JYC10. Janser will give 10% extra bonus discount to you all for sure. Yes, it's a promise from my end, but you need to share the screenshots of all the transactions that you will be making using the code, and I'll be cross checking with the team for sure. I will cross check with the team. Agar match karta hai, then I'll definitely give you 10% bonus for sure. All right, so don't miss this out. This offer is valid, like available for only this next month, January only. So don't miss this offer. This offer will begin from the January, starting of the January, and it will end by the end of the January only. Okay, and these are the iconic subscription plan as well. तो यहाँ पे भी आप जो भी plan use लेना चाहें, you can go with that and just use the code JYC10 and get additional 10% discount. जैसे ही आपको यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, जैन सर की तरफ से भी इसमें भी आपको 10% बोनस एडिशनल डिस्काउंट देंगे जैन सर. All right, so this is all about it. Just join the Telegram channel as well so that you get regular updates of all the sessions that are going to be there on the Unacademy channel, on the on Unacademy on YouTube as well as on application. You're gonna get regular updates about that as well. So guys, thank you so much for watching the session. I hope you really loved it, and don't forget to follow me. All right, and yes, you know the drill, right? Like, share, subscribe, and hit the bell icon. Yes, that's the drill. You gotta do this and share with your friends. And don't forget to again use the code JYC10, get additional 10% discount and another 10% bonus amount from Chancers and to you all. All right. So, guys, thank you so much. Stay safe, stay home, and I hope really enjoyed the session. You really loved it, and if you did, then don't forget to hit the like button. Again, I'm telling you, and yes, don't forget to take the subscription as well because it's really important if you want to learn from Giant Sir for a long time period. All right. Take care. Stay home. Stay safe, and stay motivated and stay hungry for your goals. All right. Take care. Bye bye.